Hi guys, welcome back to another new video. Hope you guys are doing well. For all of those people who do not know me, I'm Nitin and I'm doing electrical engineering from VJTI Mumbai, currently in third year. As you can see from the title, we would be talking about cost of living in Mumbai as a college student, specifically as a VJTI college student. So I would be dividing this video into three parts, wherein the first would be if you stay in a college hostel, second would be if you're staying in a PG or a sharing flat, and third would be if you're staying alone. So without wasting any further time, let's just straight away get into the video. Alright, so first things first, there is going to be the tuition fee, which is going to cost you 85,000 because I'm considering general ka fees. Obviously, बाकी सारी fees are different. ठीक है? So if you are from general category, you are going to pay 85,000 rupees per year to the college as a college fee, and it is going to stay the same for either if you stay in a hostel or if you stay in a sharing flat or a PG or staying alone. So first things first, if you stay in a college hostel, what are the advantages, what are the disadvantages is what you should know. So पहली बात तो ये है कि अगर आप कॉलेज में रहते हो उसके एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज इज अफोर्डेबिलिटी. इट इज गोना बी द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन आउट देयर if you're considering a PG or a sharing flat or staying alone. College hostel is one of those places where affordability wise it is going to be the cheapest. So according to your comfort, if you want to save money, it's going to be saved from where you stay, because Mumbai में सबसे ज़्यादा खर्चा is on your rent. So first thing is affordability. Second thing is, if it's the first time for you getting out of your own house, it is going to make you a lot more confident because you're going to do socializing in your college hostel. And इसमें it is a very important thing because when you grow up you need socialization. बहुत ज़रूरी है because उससे आपको confidence बढ़ेगा. You're going to be good at public speaking. All of these things are very important. The third thing is convenience. मतलब obviously college hostel college के अंदर होते हैं, so it's going to be very convenient for you to just get up in the morning and just get up 5 minutes early or 10 minutes early and just get out and go to the class. Then comes your amenities and services. ठीक है, first things, you will have playing grounds. Very very important thing जो कि मुंबई में बहुत कम है. You will have two big grounds to play जो कि कहीं नहीं मिलते. अदरवाइज you'll have to go pay for that 1 hour 2 hour of playing जो कि आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा. हॉस्टल्स के अंदर अभी तक वाईफाई नहीं है, बट you get Wi-Fi in college, so you can use Wi-Fi whenever you want to. That is for free. Laundry facilities भी अभी तक नहीं है. I don't think so they have a washing machine, but you can obviously wash your clothes on your own. कॉलेज का सबसे मेन थिंग इज once you have got an admission in this, आप अगले 4 साल तक सॉर्टेड हो. आपने सिर्फ फीस भरनी है और आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना कि मेरे को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं. वंस यू हैव गॉटन इनसाइड द हॉस्टल, देन देयर इज नो थिंग ऑफ कि यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ इट. जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, यू आर गोना बी इन द हॉस्टल. सो नाउ कम्स कितना पैसा लगता है फॉर अ कॉलेज हॉस्टल. हमारे कॉलेज में अभी 2 हॉस्टल बने हैं. वन इज द ओल्डर वन एंड वन इज द न्यूअर वन. So the newer one is a little bit costly. It is the new building. It has better amenities and all of those things. जो पुराने hostels हैं जो पहले मिलते थे, it was around 22,000 a year, and the new one is costing around 44,000 a year. ठीक है, बट इसमें एक कैच है. अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको मेस लगानी ज़रूरी है. ठीक है, मेस इज ऑल्सो गोना कॉस्ट यू 22,000 फॉर 6 months, सो 44,000 फॉर अ ईयर. ठीक है, सो ये वाला जो है आपका एक्सपेंस, ये आपको देना ही देना है कॉलेज के अंदर अगर आप कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हो. एंड देन कम्स योर डेली एक्सपेंसेस. सो लेट्स से इफ यू वांट टू ट्रैवल इन मुंबई, ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे, राइट. तो अराउंड 3,000 से लेके 5,000 के बीच में कंफर्टेबली you can travel in Mumbai for a month. Like if you take a taxi or if you're going in trains, obviously it's going to be cheaper, but 3 से 5 हज़ार के बीच में बहुत अच्छा comfortable travel हो जाता है. Then let's say if you want to enjoy also, there is no limit to spending money in enjoyment, but I feel अच्छी खासी पार्टी हो जाती है 5 to 10,000 के बीच में. ठीक है, then is your gym. Again the price would be same for all the three cases. Where our college is, यहाँ पे gym cost can vary from 8,999 to 25,000 is what I have seen. So whatever, and this I'm talking about for a year. So आप अपने हिसाब से you can select your gym if you are one of those people who would want to go to gyms. Additional cost में miscellaneous के लिए आप रख लो 3 to 4,000 as emergency or anything. So this is gonna be the college hostel part. I guess आपको समझ आ गया होगा कि कितना मोटा मोटा खर्चा होता है.
आपका मेन कॉलेज हॉस्टल के अंदर आपका ये सही है कि आपको रहने का कोई टेंशन नहीं है 1 साल के लिए, खाने का कोई टेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली पीपल वुड नॉट लाइक द फूड ऑफ दिस प्लेस। जरूरी नहीं है ना सबको मेस पसंद है। सो इवन इफ यू नो डू मील सिस्टम आउटसाइड, बिकॉज मुंबई में डब्बा सिस्टम बहुत होता है, तो यहाँ पे रफली अराउंड 150 रुपीज अ मील होता है। सो यू कैन गेट अ गुड मील फॉर 150 रुपीज। यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल, यू डोंट लाइक कॉलेज का मेस फूड, बट यू एनीवेज हैव टू पे। तो आप अपने महीने का 5000 रुपीज और ऐड कर लेना अगर आपने बाहर से खाना मंगाना है, ठीक है। सो नाउ एडवांटेजेस हो गए, कॉस्ट ब्रेकन डाउन हो गया हॉस्टल का। नाउ आई विल टेल यू द डिसएडवांटेजेस व्हिच आई पर्सनली सी, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज शेयर्ड स्पेसेस है। I guess you are a grown-up person and you have to share your space, your private space. After a point, it's not going to be comfortable for you guys to share your space because you guys are also growing up, and eventually there is going to be privacy concerns for sure, right? And then there is going to be noise and crowd. Hostel is one place where everybody is going to stay. तो जरूरी नहीं है कि जब आप सो रहे हो तो कोई और सोएगा, तो डिस्टर्बेंसेस होगी, प्राइवेसी तो चलो है ही। देन सिक्योरिटी कंसर्न्स है, there is always a risk of a theft which can happen. Obviously हॉस्टल में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस है। प्लस लेट्स से आप जहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपके जो रूममेट है, इज इट गोना बी नाइस टू यू, इज ही गोना बी द सेम वे एज यू आर, और आपकी वाइब मैच होगी कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी फैक्टर करनी पड़ेगी आपको। तो हॉस्टल पार्ट वेर इन पार्ट 1 में वी हैव कवर्ड कितना कितना मनी लगेगा। मेन थिंग 85,000 is your fees, 44,000 if you go into the newer hostel, 25,000 if you go into the the purana wala for a year. Mess ka fees for a year is 44,000. Now we're going to talk monthly. 5,000 you keep extra for your meals if you're taking from outside. Then 3 to 5,000 you can take for transportation. 5 to 10,000 you can probably going out with friends and enjoying your life here. दिस इज लाइक खुला खुला, आई एम टेलिंग यू, इतने में बहुत अच्छी पार्टी हो जाती है, बहुत अच्छा यू कैन लिव, ठीक है। एंड जिम 10,000 फॉर अ ईयर टू 25,000 अ ईयर, वट एवर डिपेंड्स ऑन यू, जैसे भी आपको पसंद आ रहा है। ओके, सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सेकंड केस, which is if you're going to stay in a PG or a sharing flat. सबसे पहली बात तो आप क्यों लोगे पीजी या फिर शेयरिंग फ्लैट? इट इज गोना बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉलेज हॉस्टल. First being your privacy, you want more privacy. Second being you don't want any restrictions. Then you will have more security if you're gonna stay in a PG or a flat. Less chances of theft in comparison to college hostel, and many more things which will make you select a PG over a college hostel. पहली बात तो मुंबई में बहुत सारे लोग PGs लेते हैं और कॉलेज हॉस्टल को अवॉइड करते हैं, एंड दे टेक अप शेयरिंग फ्लैट्स. तो यू शुड नो व्हाट इज गोना बी द रेंट, because that is going to be the main cost that you have to bear. सबसे first thing, college fees is going to be the same, so 85,000 for a year it is going to be there. But अभी इसमें your mess वाला thing is going to not be there, right? You won't have to pay 44,000 here, but you will have your cost of groceries every month, ठीक है? You will have your cost of Wi-Fi every month. You will have your cost of laundry every month if you do not have a washing machine here. Obviously, if you are not staying near college and if your PG is a little far away, then you would have cost of travel. So first things first, for a PG I'm saying the rent would vary from 15,000 to 35,000 in the area of Matunga, which is near college, ठीक है? So इसमें 15,000 I'm assuming is like going to be a room where you will have to share it with somebody, probably a person. उसमें either you can get all the amenities in which you will have a geyser, you will have a kitchen which you can share, you will have fridge, you will have a AC, you will have a Wi-Fi, ठीक है? In sharing I'm saying, if you wanna stay privately, PGs में private room भी मिलते हैं, so cost will go up to 30,000 a month, easy. This is like this metric 15 to 30,000 के बीच में आपको एक अच्छा प्राइवेट रूम मिल जाएगा पीजी में, बट ऑब्वियसली किचन वुड बी शेयरिंग. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 15 to 30 wherein you will have like a good life, ठीक है? अगर आपको थोड़ा पीजी दूर है कॉलेज से, तो ट्रांसपोर्टेशन में आप पकड़ लो 3 to 5,000 ईजी. खाना पकड़ लो आप 5,000 अगर आप डब्बा सिस्टम यूज कर रहे हो. अदरवाइज अगर आप खुद बना रहे हो ग्रोसरीज लेके, 10,000 और 15,000 के बीच में आपका मिनिमम ग्रोसरी आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है? एंड देन वुड बी योर
enjoyment, which can obviously vary a lot, depends on person to person, but 5 to 10,000 के बीच में it is gonna be a very very chill life for you guys. बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है. You can go out with your friends, you can have good food, you can have a good life in Mumbai, and obviously gym is gonna obviously stay the same जैसे पहले था. 10 से 25 के बीच में वेरी करेगा. आपको जैसे पसंद है आप obviously वैसा जिम लोगे, right? So this is gonna be the yearly cost, 10 to 25,000 के बीच में. You can keep miscellaneous costs also, which is gonna include your electricity bill, water bill. अगर आपको water bill का भी आता है, because where I stay I don't get the water bill, I only get the gas bill and the electricity bill. But I do not use gas also because I use induction, so I get only the electricity bill. ठीक है. So all these miscellaneous expenses also you keep the money around 5,000 rupees easy. मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बट इसके बीच में आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ पीजी थिंग इज डन. शेयरिंग फ्लैट का अभी बताता हूँ. पीजी में क्या होता है, either you're gonna stay at somebody's house, or in Mumbai what happens is what they have done on a floor, they will give you separate rooms and they're gonna be a common kitchen. So people, what they do is after let's say 1 or 2 years of college, when they have made friends, and then they take up a flat. In Mumbai, the place where we stay, the place in Matunga, it's gonna cost you 1 BHK would be easily around 35 to 50,000, depending on the furnishing, whether it's unfurnished, semi-furnished, or fully furnished. Fully furnished 1 BHK flat with a hall and a bathroom and a kitchen and a room is gonna cost you 50K easy. Comfortable for like very very comfortable for 2 people. Break it down, 25,000 each. And obviously if you are little low on budget, you call more people. तो 4 लोग भी बुला सकते हो, 3 लोग भी बुला सकते हो, but I would not recommend that because it's gonna again be claustrophobic. Then there's no point getting a flat, right? Because your private space is not gonna be private anymore. It's gonna be shared with 3 people. So I feel like if you're staying in 1 BHK, you should share it with one person, so that you know you have a good amount of space where you can live and let the other person also live. And क्या होता है फ्लैट में, let's say आप एक हो, आपके 3 दोस्त और हैं, 3 दोस्त के 3 दोस्त और होंगे, और आपके 3 दोस्त होंगे. So it can get really really messy at some point. That is how college life is. ठीक है. So 1 BHK का 35 से लेके 50 तक easy. 2 BHK के अंदर आपको 75,000 और 80,000 मैक्सिमम अच्छा खासा फ्लैट मिल सकता है, बढ़िया. उसमें 2 BHK के अंदर 2 बेडरूम्स होंगे, एक हॉल होगा, 3 वॉशरूम्स होंगे, किचन होगा, बैल्कनी मिल गई तो वेल एंड गुड. इतना ही रहता है, ठीक है. तो आपको वही डिवाइड बाय 4 कर लेना या डिवाइड बाय 6 कर लेना, आपके बजट के हिसाब से डिपेंड करता है. कॉलेज फीस इज गोना ऑब्वियसली स्टे द सेम. 85,000 के अंदर आपको एक्सपेंसेस लगने वाले हैं बहुत ज़्यादा. फ्लैट में बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, बट ऑन द काउंट ऑफ you getting a good privacy, you have no time restrictions, you can get out and in any point of time. You will obviously get a parking for your vehicle. If you get a vehicle here, then you can call your friends home. Whenever your parents come, they can also stay. So all of these advantages are there. There is just sense of relaxation that you know it's your house, you can come in and go wherever you want, whatever you want to do. So that is the sense of freedom that you get when you are coming into a flat. ठीक है. So now we're just gonna summarize everything up. First thing is college fees 85,000. Rent depends on how many people are sharing it with. Let's keep 75,000 as a rent for 2 BHK. Divide by 4. This is the cost per person for monthly. Then is gonna be your electricity bill, gas bill, water bill, miscellaneous expenses हो गए सारे. उसके लिए आप 5,000 पकड़ो, वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा या डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, जो वो आपके हिसाब से है. मेड रख रहे हो तो उसके कॉस्ट अलग. Then if you have Wi-Fi which has not been included in the amenities, उसका प्राइस अलग. Roughly 799, 899 for a month is easy, which is going to be there, but it is going to be shared by 4 people. Travel expense वही 3 to 5K. Enjoyment again varies from person to person, but 5 to 10 is a respectable number. Then comes your food bill and grocery, which is the most important. If you're cooking on your own, 15 at max, divide by 4. And this is one thing which is obviously variable. आप अपने हिसाब से देखो, बट जितना मेरा लगता है 10 से 15,000 ग्रोसरी में जाता है मेरा, क्योंकि मैं खुद खाना बनाता हूँ. एंड आई डू नॉट ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड. लाइक आई डू नॉट हैव अ मील सिस्टम इन प्लेस, सो आई कुक ऑन माई ओन. मेरा 15 के आसपास आता है. अगर आपने मील सिस्टम किया तो यू कैन कट दिस अमाउंट एंड यू कैन जस्ट हैव 5 to 7K ऑफ योर मंथली
फूड मील का प्राइस. सो दिस इज ऑल द एक्सपेंस दैट कैन बी देयर. आई होप आपको समझ आ गया हो. Now we're gonna talk about if you are staying alone. First things first, why do you want to stay alone? Basically, in my case, why I am doing it, because I have been in a hostel for the past 8 years of my life. Till 12th, I have been in a hostel. तो मेरे को चाहिए खुद की फ्रीडम, खुद की प्राइवेसी, इसलिए मैंने खुद का रूम लिया है. ठीक है. दिस इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट वेयर आई स्टे. सो obviously 1 BHK लेने का फायदा है नहीं. It is going to be very big for me for a single person. So I took a studio apartment. What happens in a studio apartment? There's a bedroom, there's a kitchen, there's a washroom, and luckily for me I got it all furnished. मेरे को कुछ काम नहीं करवाना पड़ा. For me the rent, I'll give you a ballpark figure. It is going to be from 30 to 40 के बीच में, depending on the size, depending on the place. I stay in Matunga. This is what the rent is. ठीक है. For me college fees is obviously going to be the same. Then my grocery bill comes, which is going to be from 10 to 15k varying a month. 3000 miscellaneous expense ले लो जिसमें electrical, gas and water bill होगा, out of the which gas and water bill is not there for me. Only electricity is what I pay. Then comes your travel expense, 3 to 5,000 easy monthly. And if you are going out, 5 to 10k easy. Gym 10,000 a year. So this is the basic expense that you're gonna have. And सही बताता हूँ, if you want to take up a flat or a PG, it is advisable that you stay in a hostel first. If you do not have friends, you make friends first, you make good friendships, and then you shift with those people to flat or PG in the second or the third year, depending on yourself. ठीक है. That is what I would recommend. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले फर्स्ट ईयर में आके PG ले लिया, फ्लैट ले लिया. Why I did it? Because I was fed up from staying in hostel and मेरे को अकेले रहना था. That freedom of doing everything on your own. Because I'm already being so independent, I feel like I could have managed. So that is the reason I'm doing it. So nonetheless, we'll summarize third case if you're staying alone. अगर आप अकेले रह रहे हो तो I don't think so आपको 1 BHK 2 BHK की जरूरत है. आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट लो, you will be good for life. ठीक है. So उसका कॉस्ट इन माटुंगा would be 30 to 40 again. Then your grocery would be around 10 to 15. No maids, no nothing for me. But अगर आप वो लगाते हो तो 3000 to 5000 वो पकड़ लो. इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सब लगा के 4000 at max. Traveling 3 to 5000. Enjoyment again varies, but I would keep it at a 5 to 10,000 amount. All the amenities have been included in my case, but अगर आप वाईफाई लगाते हो तो you add 800 rupees more in that, and miscellaneous you keep 3000. I guess that's gonna cover everything. All this that I've talked about, it is like a very luxurious kind of a life. So this is like the higher end. Lower end obviously would be much lower, and I feel if you have a budget constraint, you better get into a hostel. एंड वहाँ पे यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन मेक अ गुड फ्रेंड ग्रुप. फिर आप मतलब ज़्यादा घूमने फिरने में पैसा लगा सकते हो अगर आपने हॉस्टल ले लिया, बिकॉज आपका वो हॉस्टल जो आपका स्टे का कॉस्ट है ना मुंबई में, वो बहुत कम हो जाएगा. खाने का आपका मेस लग गया तो आपका फूड का कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा. सो देन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी लेफ्ट विद योर सेल्फ, स्पेंड इट समवेयर एल्स. सो या दिस इज इन ऑल the expense which is going to be here in Mumbai as a college student, and the rest obviously it depends on you. It is obviously going to be variable, but I've given you a ballpark figure of all the 3 cases. ठीक है. टोटल कितना बनता है. बाकी अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करो ये वीडियो सबके साथ, सो दैट दे ऑल्सो हैव अ रफ आइडिया कि कितना कितना खर्चा हो जाता है. एंड बाकी इट इज़ ऑल अप्रॉक्स फिगर्स. इट इज़ नॉट लाइक एग्जैक्ट वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द फीस और एंड द कॉलेज हॉस्टल फीस. बाकी सारी चीज़ें रिलेटिव हैं. मिलते हैं एक और वीडियो में वेरी सून. होप यू गाइज लाइक दिस, एंड टिल देन लव यू गाइज एंड टेक केयर. सी यू. बाय बाय.